Go. Assalamu alaikum, guys. Welcome to our 31st or 34th podcast of this is the last of series on dialogues of Plato. और आज का जो हम डायलॉग डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ फेडो बाय प्लेटो. और लास्ट टाइम जिस हमने डिस्कस की थी दी अपॉलोजी ऑफ सोक्रेटिस. दी अपॉलोजी था डायलॉग का नाम बेसिकली, जिसमें हमने जो स्पीच थी, द स्पीच गिवन बाय सोक्रेटिस व्हेन ही वाज पुट ऑन ट्रायल बाय पीपल ऑफ एथेंस. तो वो हमने पूरा डिस्कस किया ज़बरदस्त तरीके से, और वो भी पॉडकास्ट अपलोड हो गई है. तो अब इसके बाद जो है द स्टोरी गोज़ ऑन, और इस जगह पे जो डायलॉग स्टार्ट होता है, डायलॉग स्टार्ट्स बिटवीन फेडन एंड एक्रेट्स. से फेडन पूछता है कि वर यू देयर व्हेन सोक्रेटिस वाज इन हिज सेल और on the day of his execution before he drank the famous poison. उसके बाद भी जब सोक्रेटिस मर जाता है तो क्या उससे पहले उसकी मुलाकात हुई थी, एंड वॉज इन द रूम वे सोक्रेटिस वॉज विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज वाइफ. तो उस पर जो है एक्रेट्स वो पूरी स्टोरी जो है वो स्टार्ट से सुनाता है. मगर स्टार्ट में जो है फिर जो है फेडन युद्ध उससे पूछ. एक्रेट्स इनकाउंटर करता है फेडो को इन द टाउन ऑफ फिलियस. एक्रेट्स आई पूछता एम है the फेडो से. yeah, the problem is that the book I was reading उसमें उन्होंने कोई context नहीं दिया, but it started into the dialogue straight away. हम्म, So maybe you think so that's why the mistake lies. But yes, Abdullah, you can tell if you want. अच्छा तो या नुमान एज यू वर सेइंग ये डायलॉग है ऑफ द लास्ट फोर डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, जिसमें एक ही स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रही है कि सोक्रेटिस was condemned to death by the jury और up until his execution. इन चार डायलॉग्स में आता है फेडो, यूथाइफ्रो, एपोलॉजी और क्रीडो. तो लास्ट डायलॉग में इन आवर लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, जब वो ज्यूरी के सामने अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है एंड एट द एंड ही इज condemned टू डेथ. उसका 280 वर्सेस 221 वोटिंग होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 280 people vote for the execution of Socrates, and so the jury condemns him to death. अब ये जो डायलॉग इट स्टार्ट्स विद एकिक्रेट्स एंड फेडो एक 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 पेलोपोनेशियन टाउन में जिसका नाम फिलियस होता है. और एकिक्रेट्स फेडो से पूछता है कि यार फेडो, मैंने सुना है कि तुम उन चंद लोगों में से थे जो सोक्रेटिस के प्रिजन सेल में थे उसकी एट द मोमेंट व्हेन सोक्रेटिस डाइड. तो मुझे बताओ कि वो क्या क्या चल रहा था उस वक्त. सोक्रेटिस के लास्ट वर्ड्स थे कुछ या नहीं थे? सोक्रेटिस के बारे में कुछ बताओ. हाउ डिड ही डाई विद द सेम वर्च्यू विद व्हिच ही लिव्ड? तो फेडो ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ. तो ये डायलॉग जो है इट्स जस्ट फेडो रिकाउंटिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ सोक्रेटिस टू एकिक्रेट्स. तो फेडो बताता चलता है उसको एकिक्रेट्स को, और फेडो कहता है कि यार सेल में उस वक्त सोक्रेटिस था, ऑब्वियसली क्रीटो था, और दो पाइथागोरियन फिलोसोफर्स थे जिनमें सिमियस और सेबिस आते हैं. और इनकी डिबेट हुई हुई अबाउट अबाउट द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल. सोक्रेटिस वाज एन एडवोकेट ऑफ दिस आइडिया दैट द सोल वाज इमॉर्टल, और वो इसके लिए चार आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है. पहला आर्ग्यूमेंट वो पेश करता है अबाउट काइंड ऑफ रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, लेकिन उसको वो कहता है द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑपोजिट्स. इट्स लाइक हम किसी भी चीज़ को कोई भी बेसिकली एडजेक्टिव अगर इस्तेमाल करते हैं. इफ आई से कि आई एम टॉल, तो मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ टू समवन हु इज नॉट टॉल. इफ आई से कि दैट पर्सन इज वाइज, आई एम कंपेयरिंग his state of mind or state of being wise to a state of not being wise, to being ignorant. So everything is measured by its opposite. तो Socrates कहता है similarly death is also being weighed against life. It is the opposite of life, and so living things come to be out of the dead, and vice versa. So एक cycle है, or there's this perceptual cycle of life and death, so that what what comes into existence will never stay the same, will never remain in the same state, and what goes out of existence, which dies, it all also never always remains the same. So एक cycle, like you come into existence, you go out of existence, you die.
but you come back to life again. The Socrates proposed this idea कि if you die you do not remain that way always. You kind of reincarnation का वो एक ये कॉन्सेप्ट पेश करता है. सेकंड आर्गुमेंट वो पेश करता है अबाउट द थ्योरी ऑफ एनामनेसिस, जिसके बारे में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वलीद हमने एक वीडियो में बात की हुई है इन डिटेल. Yes, he सेपरेट वीडियो has. नहीं हमने बनाई, लेकिन हमने इसी किसी डायलॉग में इसको डिस्कस किया डिटेल में. थ्योरी ऑफ एनामनेसिस बेसिकली प्लेटो का आइडिया था कि थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन है बेसिकली इसका नाम, कि आपकी आपकी जो सोल है ना. हाँ, आई रिमेंबर हमने नेटिज्म वाली हमारी डिबेट हुई थी, उसके अंदर हमने काफ़ी लेंथ में इसको डिस्कस किया था. तो थ्योरी ऑफ एनामनेसिस बेसिकली प्लेटो प्रपोज करता है सोक्रेटिस के अल्फाज में कि आपकी सोल है वो इमॉर्टल है, और उसमें नॉलेज जो है वो भी उस आपकी 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 माइंड में स्टोर होता है, आपकी सोल में स्टोर होता है. एंड आफ्टर यू डाई वो नॉलेज आपकी सोल में रहता है. लेकिन व्हेन वंस यू आर रीइंकार्नेटेड ना, तो इन द ट्रॉमा ऑफ दैट बर्थ, इन द ट्रॉमा ऑफ दैट रीइंकार्नेशन यू लूज योर नॉलेज. आपका नॉलेज लॉस्ट हो जाता है, या फिर आपकी रिकोलेक्शन, आपको आपको कॉन्शियसली ये नॉलेज नहीं होता कि यू हैड नॉलेज बिफोर यू वन रीइंकार्नेटेड. सो एवरी act of gaining knowledge is only an act of recollecting knowledge which you previously had but lost in the trauma of reincarnation. तो ये इसका आइडिया था प्लेटो का अबाउट द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, कि योर सोल इज इमोर्टल, इट हैज नॉलेज which it cannot lose and it will always be immortal. थर्ड आर्ग्यूमेंट वो पेश करता है द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एफिनिटी. सॉक्रेटिस फिर से ऑपोजिट्स को वे करता है. he compares the material with the immaterial, he compares the visible with the invisible, he compares the mortal with the immortal. और ये कहता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो पहली कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, लाइक मटेरियल, विजिबल एंड मॉर्टल, एंड द अदर कैटेगरी इज इमटेरियल, इमॉर्टल एंड इनविजिबल. तो जो बॉडी है वो सेकंड काइंड की है, सॉरी बॉडी है वो फर्स्ट काइंड की है, और जो आपकी सोल है इट्स ऑफ द सेकंड काइंड. तो दिस वुड अगेन सजेस्ट दैट द सोल इज इमॉर्टल एंड वुड सर्वाइव डेथ. अब इस पॉइंट पे सिमियस और सेबिस जो है ये दोनों ऑब्जेक्शंस रेस करते हैं, और सिमियस कहता है कि यार मेरा तो ये ख्याल है सोक्रेटिस के जो सोल है ना वो एक आप कह लो अट्यूनमेंट है ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. द अट्यूनमेंट विल ओनली एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल मेरा जो गिटार का ट्यूनिंग बॉक्स है, इट इज काइंड इट सर्व्स द पर्पस ऑफ द अट्यूनमेंट ऑफ माय गिटार, लेकिन इट कैन ओनली एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज द गिटार द इन इट्स एंटायरिटी एग्जिस्ट्स. और फिर सेबिस जो है वो कहता है कि यार जो सोल है ना वो चलो उसकी बड़ी लंबी उम्र है, उसकी काफ़ी लंबी उम्र है, और वो काफ़ी रीइंकार्नेशन सर्वाइव कर सकती है. कि आपने 4-5 डिफरेंट शेप्स ली, डिफरेंट बॉडीज ली आपने, आपकी सोल ने अपनी इंटायर लाइफ टाइम में, लेकिन आफ्टर दैट इट सेल्फ डाइज. इट इज़ नॉट इमॉर्टल इन द सेंस कि वो कभी भी एस्केप नहीं करेगी डेथ को. लेकिन सोक्रेटिस दोनों को रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये जो थ्योरी ऑफ अट्यूनमेंट है ना, इट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द थ्योरी ऑफ एनामनेसिस जो प्लेटो और सोक्रेटिस ने प्रपोज की. वो कहता है कि जो सोल है इट हैज एग्जिस्टेड बिफोर द बॉडी. तो सिमियस का जो आर्गुमेंट था दिस अट्यूनमेंट थ्योरी वो उसी वक्त इट फॉल्स अपार्ट, कि क्योंकि सिमियस वाज प्रपोजिंग कि जब तक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट एग्जिस्ट्स मींस एज लॉन्ग एज द बॉडी एग्जिस्ट्स, ओनली तब तक the attunement or the soul exists. लेकिन according to Socrates' theory of anamnesis, theory of recollection, the soul has existed before the body and it will continue to exist after the body perishes. The attunement existed before the musical instrument in the analogy that Simius presented, and it will continue to exist after in the absence of the musical instrument as well. As for Sebi's का जो आर्गुमेंट था कि आपकी जो सोल है it outlives many bodies but then it itself perishes after several reincarnations. उसके बारे में सोक्रेटिस कहता है, वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन एंटर करता है अबाउट कॉजेशन, और वो कहता है कि यार मेरा फोर्थ आर्गुमेंट है ना, इट विल रिजॉल्व योर लिटिल कनंड्रम हियर. वो कहता है कि यार जो विजिबल और अनचेंजिंग फॉर्म्स है ना,
that is the cause of everything that we see around us, everything visible that we see around us. And the highest form is the form of the good, which Plato sometimes equates with God. तो सोक्रेटिस कहता है कि हम जो भी क्वालिटीज पोजेस करते हैं ना, they participate in the forms which is how we come to perceive our possession of those qualities. और जो form of life है, it is an essential property of the soul. और इसकी वजह से it is kind of inconceivable to think of the soul as ever being anything but alive. जिस तरह वो कहता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी डेफिनेशन के अंदर उनकी नेचर इंट्रिंसिक होती है. फॉर एग्जांपल आप कह लो कि बास्केटबॉल इज राउंड, राइट? राउंड स्फेरिकल, आई डोंट नो, यू गेट द पॉइंट, राइट? कि उसकी उसकी डेफिनेशन के अंदर उसकी नेचर इंस्टिल हुई हुई है, जस्ट लाइक गॉड इज ऑल पावरफुल. गॉड के डेफिनेशन में ये चीज़ इंट्रिंसिक है कि गॉड इज ऑल पावरफुल और इमॉर्टल. उसी तरह सोक्रेटिस कहता है कि सोल की डेफिनेशन के अंदर, क्योंकि it has its essential property as the form of life, so it would be inconceivable to think of it as anything but immortal. अब सोक्रेटिस कंक्लूड करता है इस इंटायर डायलॉग को with a myth about what would happen after you die, what would happen to souls after death. फिर वो बात लेता है, he says some last goodbyes, वो पॉइजन पीता है एंड ही डाइज. यहाँ पे डायलॉग एंड होता है. अब थोड़ा मैं साइड नोट पे थोड़ा टेंजेंट पे जाऊंगा. आई वाज रीडिंग दिस बुक बाय सोरन कायकेगार्ड, ही सामने पड़ी है, फियर इन ट्रेमलिंग. और मैं उसमें आई वाज रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग बिब्लिकल अकाउंट ऑफ अब्राहम्स सेक्रीफाइस. और ये जेनेसिस 22 में मेंशन्ड है कि अब्राहम वाज कमांडेड बाय गॉड टू सेक्रीफाइस आइजैक. इवन तो हमें इस्लामिक ट्रेडिशन बताती है कि ही वाज कमांडेड टू सेक्रीफाइस इस्माइल, लेकिन मैं चलो मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल अकाउंट he was commanded to sacrifice Isaac, right? Isaac. I won't get into the debate, was it Isaac, was it Ismail, why was it fabricated and all of that. लेकिन हम मान लेते हैं for the time being कि it was Isaac that God commanded to sacrifice. So I was reading this book, Fear and Trembling by Kierkegaard, और this idea struck me कि that act of sacrificing one's own son, in ethical terms आप उसको murder कहोगे, right? But in religious terms you call that sacrifice. तो अगर आप देखो तो in any material ethical terms it is hard to understand that action. अगर आप universal की बात करो, क्योंकि in society you speak through the ethical, you speak through the universal, right? अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार sacrifice your son, right? What you would hear is that I'm asking you to kill your son. So in any material or ethical terms that action was not justifiable. लेकिन क्योंकि God commanded Ibrahim, so it took him out of the universal into the singular individual, जिसके लिए the religious superseded the ethical. So there was this teleological suspension of the ethical, आप कह लो. तो it reminded me of Socrates in a sense कि I could totally be wrong about this. इससे मेरा आइडिया है, बट सोक्रेटिस की अगर बात करें तो इन एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी it is known कि our life is bestowed to us as a gift by the gods. और अगर तो आप उस लाइफ को escape करो through unnatural means, like if you commit suicide, so you're committing rebellion against the gods and you invite onto yourself the wrath of the gods. अच्छा, तो why did then Socrates kill himself? Why did Socrates commit suicide? जब जो religious था, it demanded him not to do that, and the ethical as well demanded him not to do that, because obviously in ethical material terms no man should kill himself, right? No matter the despair, no matter the reason, no matter the causes. So here in this example as well, just like Abraham वाली story जो Kierkegaard बयान करते हैं अपनी किताब फिर इन ट्रेमलिंग में, here as well there is a teleological suspension of the ethical and the religious. So in one of the four last dialogues of Plato,
सोक्रेटिस का दोस्त उससे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द इंटरलॉक्यूटर, वो उससे कहता है कि यार सोक्रेटिस तुम भाग जाओ, तुम एस्केप कर जाओ प्रिजन, अगर तुम्हें, चलो मान लेते हैं कि जनरल विल जो है वो तुम्हारे खिलाफ है, जनरल विल इज बैड इंट्रिंसिकली, तुम बुरे नहीं हो, ना ही तुमने इम्पाइटी प्रमोट की, ना ही तुमने ब्लास्फेमी कमिट की, ना ही तुमने यूथ को करप्ट किया, लेकिन जनरल विल ये मानती है कि तुमने किए एक सारे काम, और इसलिए जनरल विल ने तुम्हें कंडेम कर दिया टू डेथ। बट यू एज अ पर्सन, you as a singular individual, rise above the universal and understand that it is not what you did. You should stand up with truth, and you should not kill yourself for something you did not do. What Socrates' friend was trying to do was to invite him to a teleological suspension of the ethical and the religious, in a way he did not kill himself for what he did not do. But what Socrates did was, what he said was कि यार देखो मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है in the name being an advocate of truth and virtue, तो अगर मैं अपनी मौत के वक्त इस चीज से भाग जाऊं और मैं जनरल विल का साथ ना दूं, क्योंकि ही सेड कि if you are not, ऑफिस में पैराफ्रेज कर रहा हूं, if you are not, if you're living in a society and if you do not go by the rules of that society, तो you're no good, right? तो अगर तो ये सिविल सोसाइटी, अगर जनरल विल चाहती है कि आई किल माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द हार्म्स दे थिंक आई डिड, तो आई शुड किल माई सेल्फ, तो इन अ वे ही वॉज एडवोकेटिंग ऑनर, आप कह सकते हो. So in this case as well, there was a teleological suspension of the ethical and the religious by virtue of honor. तो ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया, बट परहैप्स ये पैराडॉक्स से हम निकल सकते हैं बाय कंसिडरिंग द फैक्ट कि इट वाज एन अनविलिंग एक्ट. सोक्रेटिस ने विलिंगली अपने आप को, ही डिड नॉट कमिट सुसाइड विलिंगली, but he was condemned to death by the general will, by the jury. He had no choice but to drink that poison. So in a way, agar to he had done that willingly, that paradox would hold. But yeah, it was just an idea that I got while reading that book. तो ये था डायलॉग फेडो बाय सॉक्रेटिस. हाँ, it is I think so it's the last dialogue, बल्कि I think so it comes before Crito. खैर, this might be our last episode on the Plato series. हम इसके बाद एरिस्टोटल पे मूव ऑन करेंगे, निकोमेथियन एथिक्स पे, और शायद हम we'll revisit Plato in the future. और हम जो डायलॉग्स, हमने माइनर डायलॉग्स हैं, एल्सिबाइडीज हो गया, जो सेवंथ लेटर हो गया, और इस तरह के कुछ डायलॉग्स हैं जो हमने रिव्यू अभी नहीं किए, वी माइट डू दोज इन द फ्यूचर एज वेल. तो नुमान, यस, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? हाँ बस यार, yes, you already pretty much told everything, Abdullah, but yes, जैसे कि आपने भी बताया कि Socrates, why Socrates was talking about dying, and whether taking your own life is, for a philosopher or for any individual, is much better than, you know, than living. तो एज वी नो कि जैसे कि डायलॉग स्टार्ट होता है, Socrates, after sending his wife home and his young child, Socrates बैठ, मतलब कि अपने बेड के ऊपर अपना 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 पाँव रखता है, अपने घुटने रगड़ते हुए कहता है एक हाथ से कि what is, it's a very strange relationship between pleasure and pain, and it seemed like कि जैसे कि इन दोनों के बीच में एक law of attraction है, और gods knew that, like they are talking in context to the Greek gods, that these, like if you follow pleasure, if you follow pain, if you follow either one of these things, the other one follows you, the follows you as well. Or there was an ongoing war between these two, and God stopped that war by hanging these both with one end. और इसी के वजह, जैसे कि बात हुई तो सीबीस उससे पूछता है कि सोक्रेटिस, व्हाट हैपेंड टू यू मार्क, लाइक तुमने सारी जिनकी ओरेटेटर्स, पोइट्स वगैरह के ख़िलाफ़, मतलब के ख़िलाफ़ डिबेट्स की, उनके ख़िलाफ़ की, मगर तब तुम खुद मरने जा रहे हो, तो यू आर कोटिंग पोइम्स एंड यू नो एंड यू आर डूइंग पोइट्री एज वेल. सो व्हाट हैपेंड, सो सोक्रेटिस बात करता है कि आई वॉज हैविंग दिस ड्रीम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम,
और ये ड्रीम मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अपनी लाइफ में आया कि इन विच अ वॉइस केम एंड सेड कि सोक्रेटिस गेट अप एंड कंपोज म्यूज़िक। और तो सोक्रेटिस कह रहा था कि आई थॉट कि इसका मतलब ये था कि आई टेक माई फिलोसॉफिकल सर्च टू द बेस्ट, और उसको टॉप पे लेके जाऊँ, और उसमें जितना मैं इसको मतलब कि सर्च कर सकता हूँ फॉर द ट्रू एग्जिस्टेंस, आई वुड डू दैट। बट एज आई एम ऑन माई डेथ बेड नाउ, आई थिंक सो दैट आई शुड डू what the voice was telling me to do from the long time। और उसी में सीवी अपना उसका एक दोस्त, उसका एक पोइट दोस्त है, पोइट एंड फिलोसफर एज वेल, इवन एस उसका एक सवाल पूछता है कि लाइक उसके उसी का सवाल था कि वाई यू आर डूइंग पोइट्री नाउ। तो सोक्रेटिस एमनेस के लिए ये सजेस्ट करता है सीबीस को कि सीबी शुड नॉट एज अ फिलोसफर ही शुडंट बी अफ्रेड टू फॉलो इन सोक्रेटिस फुटस्टेप्स आफ्टर सोक्रेटिस dies, and he should continue his search as well। और चाहे कि उसका जो फेथ है वो भी सोक्रेटिस जैसा हो जाए, बिकॉज द ट्रू फिलोसफर ही embraces death, and a coward or foolish person would try to escape death। So Socrates was trying to make sense of his of his trial and of his death। मतलब कि वो अपने फेथ को देखते हुए शायद अपनी जो डेथ की सर्कमस्टेंसेस को आप ये कह लो कि रिवाइज कर रहा था। तो उस पर एक डिबेट ये छिड़ जाती है कि वेदर लिविंग or living a life and searching for true existence is much better than taking your own life and then searching the meaning of true existence after you take your own life। तो उसमें सीबीस के साथ वही इसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाती है। सोक्रेटिस ट्राइस अपना वही सोक्रेटिक मेथड, उससे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक कि आर दी सेंसेस के हमारे पास जो वर्ल्डली सेंसेस हैं, जैसे कि वी हैव फाइव सेंसेस, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, सेंस ऑफ सीइंग, कैन वी perceive the true existence with these senses। तो सीबीस आगे से सवाल जवाब देता है कि नो वी कैन नॉट। So Socrates says that this means that we cannot find this means that we might not be able to find the meaning of true existence while we are in this body, while for a philosopher it will be his search will not be complete if he stays trapped in his body, or after he take after he dies उसकी शायद सर्च जो है वो आगे जाके कंप्लीट हो जाए। तो अब्दुल्ला, लाइक एज यू टोल्ड कि सोक्रेटिस, तुम कह रहे थे कि सोक्रेटिस जो था ही वाज थिंक लाइक उसने अपनी लाइफ खुद ली। तो मे बी ही थिंक्स दैट आफ्टर ही टेक्स दिस लाइफ, जो उसका जो मीनिंग है टू एग्जिस्टेंस का, ही वुड बी मच क्लोजर टू हिज आंसर आफ्टर ही डाइज। एंड मे बी ही थिंक्स कि उसकी जो पूरी सर्च जो है, सर्च फॉर ट्रू एग्जिस्टेंस, सर्च फॉर ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, it would be completed after he dies। So that is why he seems so happy, and at the same time he's feeling pleasure and he's in a feeling of pain at the same time। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग है, बट सोक्रेटिस वॉज फीलिंग दैट दिस फीलिंग एट दैट टाइम एज फेडन टेल्स अस। तो मे बी ही थिंक्स कि उसकी जो सर्च है, सर्च फॉर ट्रूथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर ही मीट्स हिज क्रिएटर्स विच आर देयर गॉड्स। तो क्या ख्याल है अब्दुल्ला इस बारे में? एंड ही यार, सेज कि जो फिलोसफर होगा, फिलोसफर वुड गिव हिज लाइफ, या वुड मीट हिज फेट और वुड डाई for because he knows कि after that he would be able to find those answers, because he might not perceive those answers with his senses with in his material body। yes अब्दुल्ला, अब बेहतर है। मच बेटर नाउ, हम काफ़ी बेहतर है अब। अच्छा, मैं हॉटस्पॉट पे आया हूँ अब। नेट थोड़ा मसला कर रहा है, तो अच्छा, आई वाज सेइंग कि या यू राइट, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग है जो अभी टू द रीडर इट माइट नॉट बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि जिस तरह मैं लास्ट डायलॉग पॉलिसी में भी हमने उस पर वीडियो बनाई थी, वी टॉक्ड अबाउट हाउ द स्पीच जो डिफेंस था सोक्रेटिस का, इट इटसेल्फ वाज फुल ऑफ इमोशन। थोड़ी शुरू में एजिटेटेड भी था, फिर टुवर्ड्स द एंड ही आयरनी उसने इस्तेमाल की, एंड ही सेड कि आइदर वे इट्स अ विन विन सिचुएशन, आइदर यू गाइस कंडेम मी टू डेथ, और एक कंप्लीट ब्लैकनेस होगी उसके बाद, या इफ देयर इज नो आफ्टर लाइफ, या अगर हमारी असल में ग्रीक mythology इज ट्रू, तो आई वुड गो टू द अंडरवर्ल्ड एंड आई वुड मीट ऑल दोज लेजेंड्स, होमर,
and all those ancient legends जिनसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा. तो yeah, you're right. He was, you can say, between that uh, thin line of pain and pleasure, or bus. It's like, to be able to comprehend Socrates is, for me, a 22-year-old, it's not very easy to do, right? हम dialogue पढ़ तो लेते हैं, but इसमें जितनी layers है ना, I don't think कि by the first reading you can fully be able to comprehend or cherish the gems that you're just merely reading. तो Socrates की जो calmness थी ना, despite being condemned to death, despite being virtuous, despite not having done those things जिसके लिए उसको accuse किया गया, condemn किया गया, तो उसकी जो calmness थी, it is worth praising. तो yeah, Socrates, whatever word I use, it would be an understatement, right? क्योंकि obviously we know he was an intellectual, but he was much more than that. You get the faith he had in virtue, the faith he had in truth itself. कि I have not done any wrong. I am innocent of all the crimes that the general will has accused me of. लेकिन फिर भी I would yield to the general will, and I would rather die than go against the general will. क्योंकि सिविल सोसाइटी में रहने का पार्ट ये होता है कि you sign that social contract, and whatever the state condemns you to, whatever the state wants, whatever the general will wants, you have to do that. And he died living that law as well. तभी वो किसी और लैंड जाके नहीं रहा, तभी वो उसने escape नहीं किया, and all those things. So yeah, it's he, to say the least, he was a very interesting character. And perhaps जब हम आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद, when we revisit Plato, we would be able to um, recount all these things in much more detail, और हम अपना एक creative analysis भी दे पाएंगे. अभी तो we just like casual readers, right? अभी हम कोई philosophers नहीं है यहाँ पे जो हम एक in depth analysis पेश कर सकें. We're just people who read because for the love of reading, for the sake of reading, for the sake of our own intellectual growth, right? So yeah, I suggest कि if someone's into Plato, you should start with the symposium. आप सिम्पोजियम पढ़ो, आपको थोड़ा सा एक्वेंटेड होने में प्लेटोनिक स्टाइल से और सोक्रेटिक डायलेक्टिक से थोड़ा सा आपको एक दो डायलॉग लगेंगे. If you're a casual reader of philosophy, फिर you should move on to the Republic, you should move on to Phaedrus and all those other dialogues. So yeah, it's been an interesting journey reading Plato. I read these dialogues a second time for these podcasts, or we'll move on to Aristotle, like I said, or फिर in the future we might revisit Plato. Yes, you are very right, Abdullah. It was a very good experience. We have come a long way. It's our 34th podcast. और यस इसमें हमारी अपनी तो यस वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. इसके बाद हमने एरिस्टोटल को पढ़ना है. देन वी आर गोना मूव टू we are gonna move to Saint Augustine, then Marcus Aurelius, then Nietzsche, then you have a long way to go. Then उसके बाद ईस्टर्न philosophers आएंगे, हमारे इस्लामिक philosophers, इब्न रुशद, then Imam al-Ghazali, अब्दुल कादिर. then it's a long way to go, but ये बिल्कुल सही बात है कि आज से जब हम 5 या 6 साल बाद इस टॉपिक को रिविजिट करेंगे, मे बी वी विल बी एबल टू गिव a more in-depth analysis of this of Plato dialogues, or these are evergreen dialogues. They're like you Hmm. were telling me, there are like 3 million citations of Platonic dialogues of the Hmm. Republic. You told me specifically. So this is a very very genuine and very beautiful piece of art, which I sometimes I think I cannot comprehend कि किस तरह we have this masterpiece alive and so in you can say so in such a good health with us, because uh,
we have lost because humans have lost a lot of work related to literature and philosophy to wars and different kinds of stuff. But we are very fortunate to read this thing at this time of human history. और अब्दुल्ला बिल्कुल सही बात है। सुक्रेटिस की थोड़ी सी मिक्स फीलिंग्स थी रिगार्डिंग हिज डेथ। और उसने शायद इसलिए भी मतलब कि एग्ज़ाइल का रास्ता चूज़ नहीं किया बिकॉज ही हैड टू चूज़ हिज ऑन फेथ इफ़ यू रिमेंबर। he did not took the option of exile because उसको पता था शायद कि like I'm not able to influence poets, I'm not able to influence craftsmen because those people are some other kind, those people have some other kinds of knowledge, and those people tend to say that they know everything, but he knew कि उसकी जो legacy है, his legacy will put a big strain on philosophers। उसकी जो philosophers जो हैं आने वाले वक्तों में they would look up to him, so that is why maybe he knew like if he took exile he will not, he like he said like if he cannot speak truth in Athens he will not be able to speak truth anywhere else। तो यहाँ भी हमें नज़र आता है कि ही इवन ऑन दिस डेथ पे ही इज टॉकिंग अबाउट philosophers and philosophers embracing death in a grace, because he believes कि philosophy की जो ट्रू लर्निंग जर्नी है वो कंप्लीट होगा आफ्टर हिज मे बी बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर बट he is putting out a word like maybe the philosopher's true philosopher's journey would complete after he embraces death and meet his creator। तो yes Abdullah, thank you very much for suggesting these books and और yes Abdullah, reading is a good hobby। और uh, ये हमें जैसे कि you told me like you started reading Plato, uh, उसकी डायलॉग इस तरह आपने पढ़ना स्टार्ट किया because you wanted to see how a human in 2500 BC used to think like 2500 years ago he used to आज think से like 2300 साल पहले। 2300 साल पहले तकरीबन। so yes, so Abdullah, what do you think now? हाँ यार, इंस्पायरिंग होती है इस तरह के हिस्टोरिकल टेक्स्ट। यू समहाउ सी कि हाउ थॉट itself has progressed throughout the centuries। अभी I'm reading the works of Kierkegaard, और इससे पहले मैं रूसो और उससे पहले डेकार्ड पढ़ रहा था। और it's interesting reading philosophy primarily for the sake of one's own intellectual growth। कि you read these great intellectual ideas of other thinkers, and it somehow influences your thinking as well। You इसलिए I write down a lot of my thoughts, and this is itself an outlet। This podcast is an outlet of my thoughts, एक kind of journal है। और मैं जब अपने मेरा जो नोट पैड है वो पूरा भरा हुआ विद माय आइडियाज। आई बेसिकली राइट एवरी डे। कुछ भी मैं सोच रहा होता हूँ मैं उसको लिखता हूँ, ताकि मैं जब साल पहले का अपने थॉट्स लिखता हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, आई एम एबल टू सी हाउ दैट थॉट हैज प्रोग्रेस, एंड दैट इज primarily by virtue of reading other works, other thinkers, these amazing thinkers, such as Plato, Aristotle हो गया, Kierkegaard। I'm a huge I'm fond of Kierkegaard's prose जो भी मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। तो primarily through reading these great thinkers आपकी अपनी 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 thought progress होती है, and you become a more, not only a knowledgeable person but a wiser person as well। आपकी आपकी डायमेंशन है ना बेसिकली, कि जितनी ज़्यादा ऑपोजिशंस होंगी ना आपके दिमाग में ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स, उतनी आप उतना आपके पास चॉइसेस हैं टू साइड विद। राइट, पहले आपके पास होता था अच्छा दिस इज ब्लैक और वाइट, नाउ देयर इज a ton of gray stuff in between। That gray stuff makes the thin line between the black and the white more clear to you जब आपके पास opposing arguments ज़्यादा होंगे। So that's why I think everyone should read। Yeah, I used to read a lot of fiction मैंने बहुत पढ़ी है। फिर आई गॉट इनटू सेल्फ हेल्प बुक्स, और फिर वो सारी जो मोटिवेशनल बीएस होती है। जो मेरा एक दोस्त है यार, वो सिर्फ पढ़ता है मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक्स, ठीक है, जो इतना स्टिमुलस आपको देती हैं। 5 बजे उठो, ठीक है, 5 बजे उठो, अपना बिस्तर साफ करो और अपने दांत ब्रश करो, इस तरह की जो बीएस होती है ना,
विदाउट एनी रिस्पॉन्स, ओनली स्टिमुलस। तो उसमें मैं फंसा रहा काफ़ी अर्सा, 1 से 1.5 साल में सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ता रहा। होती हैं बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स भी होती हैं, पर अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, ब्रेवल साइकोलॉजी एंड वो वाली साइड, तो इट्स इंटरेस्टिंग। किसी और की मैं क्या ही बात करूं, लेकिन अब एन इंडिविजुअल when they get into the hard stuff, when they get into something which makes them question their own beliefs, and when they reflect back on their progress, तो वो जो फीलिंग होती है ना of how far you've come, basically अगर वो 0 से 1 पे भी है, नॉट सेइंग 0 to 100, वो तो एक लाइफ टाइम लग जाती है आपको 0 से 20 जाने में भी। लेकिन इफ यू इवन सी दैट प्रोग्रेस 0 से 1 वाली ना, तो दैट इट सेल्फ इज अ वेरी वेरी प्लेजरेबल फीलिंग। उस डोपामिन हिट के लिए आप कह सकते हो बेसिकली I reflect on the books that I've read and how far my thought has progressed. एंड So करें true. मजीद यहाँ पे? So You true. are given some Yes, Abdullah. information. Abdullah. Yep. Yes. After this, we are gonna go on to Aristotle, Abdullah. Or Hmm. yes, we do like your suggestions. If any of the guys coming from Instagram is watching these videos, uh, they can send. They can. We have the link for the Instagram in the bio as well. You can send us messages, Abdullah. And this, as you told, this is a journal for ourselves to see how we have improved over the years. तो यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। और यहीं हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।